Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Uzair, and today our lecture is the nature of science. The nature of science. Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge. Science होता क्या है? Science is a process that seeks to understand the nature and social world through the collecting and analysis of evidence. यानी कि साइंस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम समझते हैं हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, समझते हैं चीज़ की नेचर को बाय कलेक्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस। साइंस के अंदर होता क्या क्या है? साइंस के अंदर फैक्ट्स, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक मेथड। द साइंटिफिक मेथड इज़ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट साइंटिस्ट फॉलो व्हेन अटेम्प्टिंग द आंसर अ क्वेश्चन और एक्सप्लेन एन ऑब्जर्वेशन। has been used for some of the most famous discoveries. नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट वाइन्स। स्मॉलपॉक्स वाज अ डेडली contagious disease with a 30% fatality rate. And the disease is now eradicated thanks to a doctor who employed the scientific method. नेक्स्ट हम बात करते हैं एन ऑब्जर्वेशन इज़ अ फैक्ट ऑफ व्यूइंग और नोटिंग अ डिटेल। फैक्ट और occurrence। नेक्स्ट हम चलते हैं द हाइपोथेसिस hypothesis is the testable explanation or prediction based on the observation and the scientist prior knowledge. Parlimony may be supported or rejected. Dr. Jenner's hypothesis: if a person was exposed to cowpox, they would become. Next, an experiment tests the hypothesis under controlled conditions with defined variables. Independent variables, dependent variables, and our last way है controlled variables. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है? न्यू फैक्टर दैट इज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड एंड टेस्टेड। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? द मेजर्ड रिजल्ट दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और द लास्ट पे जो सा है वो है कंट्रोल वेरिएबल। कीप कांस्टेंट सो दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स द वैक्सीन, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इम्यून टू स्मॉल पॉक्स कांस्टेंट ओनली। मैनी एक्सपेरिमेंट use two or more group for comparison. The control group does not receive the independent variable. The experimental group receive the independent variable. Next हम चलते हैं data includes all of the measurements and observations made during the experiment. The boy was inoculated 20 times with smallpox without catching it. The conclusion states whether the hypothesis is supported by the experiment. Peer review. Peer review involves publishing the result for other scientists to review and check for error, bias, or under controlled variables. Dr. Jenner's submitted his study to the Royal Society for Medicine. Margin of error. Margin of error is an estimate of how different a result is from the actual value. All experiments have error in measurements, designs, or other factors. The margin of errors can be reduced by increasing the sample size or number of observations used in experiment study. Next, Dr. Jenner was able to locate several other patients who were killing to volunteer their children.
The results were final published journal called his technique vaccination. एंड नेक्स्ट लास्ट स्लाइड पे है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कंट्रोल टेक प्लेस इन लेबर लैब्स और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट और जो सी नेचुरल है टेक प्लेस इन द रियल वर्ल्ड विदाउट मैनिपुलेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.